Hey students, hi everybody, a very good afternoon to everyone right there. Welcome to the worry session. My name is Preksha Sharma, your English educator at Unacademy, and I give you all a very warm welcome to this very particular session wherein we are going to deal with the chapter from the diary of Anne Frank. It's gonna be the entire explanation of the entire chapter along with the Menti quiz right at the end. Okay, so I welcome you all to the session. Kindly give me a confirmation in the comment section that you all can see me well and you all can hear me well. I would love to receive this confirmation from everybody right in there. Please confirm in the comment section that I am visible and audible to everybody right in there. I hope you all can see me well and I hope you all can hear me well as well. Hi and hello everybody. Hey Krish, hi dear. Welcome to the very session. So everybody, today we are going to do one of the very important chapters which is from the diary of Anne Frank and it's going to be the entire explanation. So please make sure you all are going to listen to me carefully. Let's get started everybody. So I'm sure you guys know my name. I'm Preksha Sharma. I've done masters in English from Delhi University and for the past few years I've been guiding a lot of you to be really good in your communication skills and to score good marks in your academics. So today I'm here again to teach you one of the chapters which is going to be a major one from the examination point of view. Please make sure you understand the chapter well. If you have any questions, any doubts, you are open to ask all your doubts in the comment section. So do not forget asking me anything. It's gonna be really an important thing. Alrighty people. एक्स गेमर्स बेटा मेंटी बिल्कुल एंड में ही होने वाली होगी, ठीक है। लास्ट के 15 मिनट में मेंटी होगी। पहले मैं आप लोगों को सारा चैप्टर समझाने वाली हूँ। ओके, so from the diary of Anne Frank, anybody, would you please tell me like who has written the chapter? Where has this chapter been taken from? Anybody in the comment section please. कहाँ से ये चैप्टर लिया गया है? जल्दी बताओ कहाँ से ये चैप्टर लिया गया है? From the diary of Anne Frank, explanation with Menti quiz. जल्दी बताओ everybody. हे श्लोक, हाय डियर। ओके, एन फ्रैंक डायरी। हाँ, एक्चुअल में नाम क्या है? मतलब दिस वेरी पर्टिकुलर चैप्टर हैज बीन टेकन फ्रॉम वन ऑफ द बुक्स। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बुक इफ एनीबडी डज नो इट? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ओके, इट्स द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। बेटा अच्छे से पूरा नाम बताना होता है ना। आपसे आपका नाम पूछूंगी तो आप अपना निक नेम तो नहीं बताओगे मुझे, ठीक है? यू आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू आर गोना टेल मी द एग्जैक्ट एंड द एक्चुअल नेम, सो दैट्स व्हाट आई डिमांड हियर एज वेल। ऑलराइटी, क्लियर? एन फ्रैंक बेटा, एन फ्रैंक नहीं, इट इज नॉट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इट इज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है? वो नॉवल का नाम है, रिमेंबर दैट। चलिए आगे चलते हैं। आपके बुक में बेटा बिफोर यू रीड सेक्शन दे रखा है। मैंने आप लोगों को ये बहुत बार बता दिया है कि बिफोर यू रीड सेक्शन को आपको इंपॉर्टेंट कंसिडर करना है, स्पेशली नेल्सन मंडेला के चैप्टर में और एन फ्रैंक के चैप्टर में। क्यों? बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल बैकग्राउंड दे रखा है, कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रखी है which is really important for you to know, because the question can be there in your examination, any value based kind of thing or any competency based or any chapter related to the background of the given chapter, sorry, or any question related to the, yes, Shloka X Gamers, you're right. या फिर any question related to the background of the given chapter, ठीक है? तो please remember that. अभी हम start करते हैं। Annalisa Mary Anne Frank, तो पूरा नाम क्या था Anne Frank का? Annalise Mary Anne Frank. Kindly remember that, one of the very important things, okay? She was born on 12th June 1929 and February or March, all right. She died in 1945. Okay, remember this date, again important. Let me just highlight it for all of you so that you guys can remember it well. All right, Annalise and Frank. Okay, this is what you need to remember everybody. February March 1945. Okay, so who was she? She was a German born Jewish girl. तो वो जर्मन में क्या कहते हैं, सॉरी, वो बेसिकली जर्मनी में बड़ी हुई थी, ऑलराइट, और वो Jewish girl थी, who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam. ओके, उसने कब लिखा? जब वो छुपी हुई थी अपनी फैमिली के साथ और 4 फ्रेंड्स के साथ। कहाँ पे छुपी हुई थी? इन एम्स्टरडैम। ओके, प्लीज रिमेंबर दिस इज देयर। मिस्टर नीट, डॉक्टर आदर्श, of course the mentee is there, but that is right at the end of the very session. I've told you there is an explanation in the given session, so please just be with me. Yeah.
ओके एम्स्टरडैम में कब? ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर टू. सो व्हाट exactly is the background of the given chapter? We see that it is during the time of World War II, all right, when German was occupying the Netherlands. Therein she was hiding in Amsterdam, all right. So the situation was not good at that particular time. This is the background of the diary, I mean the entire novel, the diary of a young girl that she had written. ओके हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम. उसकी फैमिली कहाँ पे चली गई थी? एम्स्टरडैम चली गई थी. आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी. जब नाजीज ने क्या किया था, उनकी जो स्ट्रेंथ बढ़ गई थी और उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था जर्मनी. बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स. लेकिन वो लोग फंस गए थे. ऑलराइट, ट्रैपिंग इज लाइक फंस जाना. वो लोग फंस गए थे जब जब जो नाजी का ऑक्यूपेशन है वो नीदरलैंड्स में भी बढ़ गया था. ऑलराइट, इज दैट क्लियर? अक्षर, दैट्स गोना बी राइट एट 3 o'clock. बी राइट देयर. Her family had moved to Amsterdam, ठीक है, ये मैंने आपको बताया. As persecutions against the Jewish population increased. यानी कि persecutions का क्या मतलब होता है कि उनके against, यानी कि उनको आप क्या कंट्रोल में लेना स्टार्ट हो गया था और बढ़ने लगा. द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग. तो फैमिली कहाँ गई? छुपने चली गई. हाइडिंग मतलब छुपने गई. कहाँ पे? जुलाई 1942 में वो लोग छुपे थे. ठीक है, शी डाइड इन 1945. नोटेड. ठीक है, इज दैट क्लियर? सो वो 1942 में छुपे थे. एंड कहाँ छुपे थे? इन हिडन रूम्स इन हर. कहाँ पे छुपे थे? इन हिडन रूम्स. ऑल राइट, in hidden rooms, that is what it is saying. All right, कहाँ पे? फादर ऑटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में. सो व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर? आपको यहाँ पे एन फ्रैंक का पूरा नाम पता चलता है, विच इज व्हाट? इन लीजे मेरी एन फ्रैंक. ओके, आपको उसके फादर का नाम पता चलता है, विच इज व्हाट? विच इज ऑटो फ्रैंक. ऑल राइट, अब हमें पता चलता है आफ्टर 2 years इन हाइडिंग. कितने साल तक छुपे थे? ऑल दीज इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कीप इन योर माइंड. वो लोग 2 साल छुपे हुए थे उस बिल्डिंग में. द ग्रुप वॉज बिट्रेड. मतलब 2 साल छुपने के बाद अब वो जो ग्रुप था, जो लोग वो लोग छुपे हुए थे, 4 फ्रेंड्स के साथ थी और अपने पापा के साथ थी. ऑल राइट, एंड फैमिली भी थी. तो वो उन लोगों को धोखा दिया गया एंड दे ट्रांसपोर्टेड मतलब कि उनको भेज दिया गया. कहाँ पे? टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेजा गया, जहां पे एंड डाइड ऑफ टाइफस. उसको वो टाइफस से उसकी डेथ हो गई थी. एग्जैक्ट क्या लोकेशन थी? बैर्गन बेल्सन था. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन कैंप. और वो कितने दिनों में मर गई? विद इन डेज ऑफ अ सिस्टर मार्गेट फ्रैंक. यानी कि द सिस्टर मार्गेट फ्रैंक हैड डाइड बिफोर हर. नाउ यू केम टू नो द नेम ऑफ द थर्ड पर्सन फ्रॉम हर फैमिली, which is what? Which is Margaret Frank. Okay, is that clear to everybody? Yes, समझ में आया? नाउ हर फादर, उसके पापा, ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप. यानी कि जितने भी लोग वहां पे छुपे हुए थे उनमें से जो बस रह गए, लाइक द पर्सन हु वाज नाउ अलाइव, इट वाज जस्ट द वन पर्सन. Okay, it was just the one person, and that was the Otto Frank. Sorry, that was the father Otto Frank. ही रिटर्न टू एम्स्टरडैम. वो बच गए थे, वो वापस से एम्स्टरडैम चले गए जब वॉर खत्म हो गया था, वर्ल्ड वॉर टू. टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड. और उनको एम्स्टरडैम में क्या मिलता है? वो डायरी मिलती है जो एन फ्रैंक ने लिखी थी. ऑल राइट बेटा, कोई वेटेज नहीं दे रखी है इंग्लिश में. सीबीएसई की तरफ से कोई ऑफिशियल क्या कहते हैं, वेटेज नहीं है अकॉर्डिंग टू द चैप्टर्स. इट्स जस्ट द लिटरेचर एंड ग्रामर राइटिंग, दैट्स इट. ओके, क्लियर? तो नाउ कन्विंस दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड. अब उसके पापा ही कन्विंस हो गए थे ये तो बहुत ही यूनिक रिकॉर्ड है. ओके, यूनिक रिकॉर्ड. ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश. तो क्या हुआ कि उन्होंने ना ये एक्शन खुद से लिया. उनको ना उसमें सारे इवेंट्स दिखाई दिए. ऑलराइट, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल इज बेसिकली द डायरी which is actually giving us the chronicles. I mean, it is telling us when does what event take place. ठीक है, सो नाउ ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश. उन्होंने ना कोशिश किया कि वो उसको पब्लिश इंग्लिश में पब्लिश करेंगे बिकॉज इट वाज ओरिजिनली इन डच. ठीक है, और क्या नाम था उसका? नाम क्या पड़ा? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल.
So what you are reading, the name of the chapter is From the Diary of Anne Frank. A lot of students get confused कि क्या कहते हैं चैप्टर का नाम क्या है. आपके सिलेबस में जो चैप्टर है बेटा उसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, लेकिन जो उसने नॉवल जो ऑटो फ्रैंक यानी कि एन फ्रैंक के पापा ने जो पब्लिश करवाया था इंग्लिश में, उसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. सो काइंडली रिमेंबर दैट. ठीक है, क्लियर. Now, writing in a diary. This is what we are now looking forward to. Writing in a diary is a real strange experience. अब यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर. वो क्या कहती है कि डायरी में लिखना ना एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है फॉर समवन लाइक मी. अब आपका पहला वर्ड इसमें क्या कहते हैं हाईलाइटेड है बिकॉज दैट इज हाउ इट हैज़ बीन गोइंग इन द एंटायर चैप्टर. इन योर एंटायर बुक दैट इज वन ऑफ द स्टाइल्स दैट हैज़ बीन यूज्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है चैप्टर की. ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि वो ये क्यों बोलती है कि डायरी में लिखना सच्ची में एक बहुत ही अजीब तरीके का एक्सपीरियंस है मेरे जैसे इंसान के लिए. ये मतलब हुआ इसका. ठीक है, क्यों बोलती है वो ऐसा? नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटर्न एनीथिंग बिफोर. अब यहाँ पे आप देखोगे नॉट ओनली और बट ऑल्सो आया है. नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो दे आर को रिलेटिव कंजंक्शंस. ठीक है, ये क्या है बेसिकली को रिलेटिव कंजंक्शंस हैं. तो यू हैव टू कीप देम इन योर माइंड कि हमें किस तरीके से यूज करना होता है. तो यहाँ पे क्या है, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटर्न एनीथिंग बिफोर. वो कह रही है सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कभी पहले डायरी लिखी नहीं, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दैट लेटर ऑन यानी कि बाद में, नीदर आई ना ही मैं nor anyone else, ना ही कोई और, will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. मतलब वो कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि ना ही मैं, मतलब बाद में, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, इसलिए नहीं बोल रही मैं कि मैंने कभी पहले नहीं लिखी डायरी, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बाद में ना ही मैं ना ही कोई और मतलब इंटरेस्टेड होगा म्यूजिंग्स. म्यूजिंग्स बेसिकली रेफर्स टू द थॉट्स. ओके कि कोई इंटरेस्टेड होगा पता करने के लिए कि एक 13 साल की स्कूल की लड़की क्या लिख रही है, उसके थॉट्स क्या हैं डायरी में. ओके, विच सीम्स टू बी लाइक वेरी ऑब्वियस थिंग ऑन द पार्ट ऑफ एनीबडी, नो, लाइक समबडी वुड थिंक कि मैं इसमें ये लिख रही हूँ, इसका क्या ही यूज है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इट. All right, yeah, no will be interested. Very good. Her thoughts ex game is absolutely correct. Okay, so now आपको पता चला कि वो कितने साल की थी, 13 साल की थी. ठीक है. Oh well, it doesn't matter. वो कह रही है अच्छा चलो छोड़ो. Oh well का मतलब is like okay चलो. Okay, it doesn't matter. कोई फर्क नहीं पड़ता. I feel like writing and I have an even. Now this is one of the very important things. Okay, हमें अच्छे से समझना है ये. वो बोलते कोई फर्क नहीं पड़ता. आई फील लाइक राइटिंग, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मुझे लिखना है. एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड. तो वो ये क्यों बोलते कि मुझे और भी ज्यादा जरूरत है लिखने की. टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, मतलब सारी टाइप की चीजें ऑफ माई चेस्ट, यानी मेरे दिल में जो बोझ है ना और जो भी मेरे दिल में चल रहा है मुझे वो सब निकाल के लिखना है. ओके. Paper has more patience than people. It is one of the very important statements made by her. आपके एग्जाम में भी इससे related question आता है. Why did she say that paper has more patience than people? It is very much significant here because it talks about the nature of people. Like a human may or may not be interested in listening to your story, be it a happy story or a sad story. Okay, but a paper is completely lifeless and is too much patient. I mean, you can write anything and everything that's there in your mind. All right, but of course, the humans, they may feel irritable, they may not like your story, they may get out of patience. सब्र नहीं होगा उनमें. तो यहाँ पे there is a comparison made between the humans and the paper, saying that humans have less patience and paper has got a lot of patience. So paper can be used to write down all kinds of thoughts that were hampering or all kinds of thoughts that were there in her mind. Okay, is that clear everyone? एक्स गेमर्स बेटा हमने ग्रामर प्रैक्टिस बेटा कल शाम को किया है. आई डोंट नो आप लोगों ने क्लास अटेंड किया या नहीं किया. मैं कह रही हूँ हमेशा ऐप पे चेक रखा करो. All right, so we had done it yesterday. If you want the practice, please make sure कि आप उसे देख रहे हो.
All right, just watch that video because abhi as of now today we don't have like any grammar class. Okay. Alrighty, Shant, I wish you luck for that. So I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed. यार मैंने ऐसा सोचा था उन एक मतलब जैसे कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे कुछ दिन होते हैं ना कि आप बहुत ही ज्यादा मतलब सैड हो या डिप्रेस्ड हो, यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, यू जस्ट लाइक बीइंग इनटू योरसेल्फ, यानी कि आप बस लेजी रहते हो। तो ये कह रही है मैंने ना ये बात एक उन दिनों में से सोचा था जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस थी, डिप्रेस मतलब सैड थी, एंड वो सिटिंग एट होम, और मैं घर पर बैठी हुई थी विद माई चिन इन माई हैंड्स लाइक दिस। ओके। बोर्ड एंड लिस्टलेस। बोर्ड मतलब कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, लिस्टलेस मतलब लैक ऑफ एनर्जी, एनर्जी नहीं थी। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और मैं ये सोच रही थी कि मैं घर के अंदर ही रहूं या मैं बाहर जाऊं। तो उस दिन उसको ये ख्याल आया था कि पेपर में ज्यादा पेशेंस है एज कंपेयर टू द ह्यूमंस। ठीक है। ओके। नाउ व्हाट डिड शी से नेक्स्ट? आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज। वो कहती है कि मैं ना फिर फाइनली वहीं रही जहां पर मैं थी। ब्रूडिंग, ब्रूडिंग मतलब होता है व्हेन यू आर थिंकिंग एक्सटेंसिवली, व्हेन यू आर थिंकिंग टू मच, जब आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हो। ठीक है। कोलन दे रखा है बताने के लिए कि क्या सोच रही थी। यस, वो कहती है हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, मतलब पेपर के पास एक्चुअल में ज्यादा पेशेंस है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, स्टिफ बैग्ड नोटबुक बेसिकली रेफर्स टू योर डायरी, मतलब हैविंग अ हार्ड कवर। ठीक है, लाइक जैसे कि जब हम एक डायरी को देखते हैं तो उसका हार्ड कवर होता है ना, सो दैट इज व्हाट हेयर शी इज टॉकिंग अबाउट। चलिए मैंने ये प्लान किया, मतलब क्योंकि मैं प्लान नहीं कर रही हूँ कि कोई और ये पढ़े। ऑल राइट। सो नाउ शी ग्रैंडली, ग्रैंडली मतलब हैप्पीली उसने उस डायरी को नाम क्या दिया, लाइक रेफर टू एज अ डायरी। मतलब ये कह रही जब तक मैं इसके मतलब ये बेसिकली जिसको हम डायरी बोलते हैं, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसकी जिंदगी में कोई एक अच्छा मतलब सच्चा दोस्त, रियल फ्रेंड बेसिकली रेफर्स टू अ क्लोज फ्रेंड, तो उसकी जिंदगी में कोई ऐसा एक क्लोज फ्रेंड नहीं था। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ अ डिफरेंस। वो कह रही है क्या ही फर्क पड़ेगा अगर मैं क्या कहते हैं इसको अपने पास रखूं और मैं लिखना स्टार्ट करूं। सो शी वॉज थिंकिंग ऑल दिस ऑन अ डे when her day was not already going very good. I mean, she was sad, depressed, bored, and lack of energy was already there. All right. Ishant, if you're good at making the answers, then that's really good. Okay, so you just need to know the story, the contextual words. You should know all the important aspects of writing an answer, like how to write a perfect answer. Then you are good to go for it. You don't need to learn it if you know the story and you know like how to frame the correct answers. So of course you can do well. Now moving next. Now वो कह रही है अब I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. यानी कि वो कह रही है मैं वापस से उसी पॉइंट पर आ गई जिसने मुझे प्रॉम्प्ट किया। प्रॉम्प्ट मतलब जिसने मुझे इंस्टिगेट किया, जिसने मुझे फोर्स किया। और राइट, किस चीज के लिए फोर्स किया? टू कीप अ डायरी, कि मैं पहली बात तो मैं डायरी रखूं। पहले मतलब पहली बात तो ये कि मुझे डायरी क्यों रखनी है, तो वो सबसे पहला रीजन इन द फर्स्ट प्लेस, मतलब जो सबसे पहला रीजन था जिसने मुझे इंस्टिगेट किया, मुझे फोर्स किया कि मुझे डायरी रखनी चाहिए, मैं उस पॉइंट पे वापस आ गई। तो यहाँ पे कोलन दे रखा है उस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। आई डोंट हैव अ फ्रेंड। एन फ्रैंक क्या बोलती है कि मेरे पास दोस्त नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, वो कहती है चलो मैं ना और भी अच्छे से बताती हूँ। There's no one believe, क्योंकि कोई भी यकीन नहीं करेगा that a 13-year-old is completely alone in the world। कह रहे हैं चलो मैं ना अच्छे से बताती हूँ, ठीक है, कि क्योंकि कोई ये यकीन ही नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की अकेली है इस दुनिया में। एंड आई एम नॉट, कह रही है और मैं हूं भी नहीं, ऐसा है भी नहीं कि मैं अकेली हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, वो कह रही है कि मेरे पास ना बहुत मेरे अच्छे मम्मी पापा हैं। एंड अ 16-year-old sister। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टर आई टोल्ड यू इन द बिफोर यू रीड सेक्शन? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टर एवरीबडी, जल्दी बताओ। व्हाट इज द नेम ऑफ द सिस्टर?
Okay, it's Margaret Frank. All right. So how old was she? She was a 16-year-old girl. And there are about 30 people I can call friends. कह रही है, और almost 30 लोग ऐसे हैं जिनको मैं friends बोल सकती हूँ. I have a family. मेरी एक family है. Loving aunts है. बहुत प्यार करने वाली aunts है. और एक अच्छा घर भी है. नो ऑन द सरफेस, वो कह रही है ऑन द सरफेस यानी बाहरी, बाहर से जैसे आपको लगता है ना कि उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, तो हम ऑन द सरफेस उसको कंसिडर करते हैं कि बाहर से तो मुझे ऐसे लगता है आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मतलब बाहर से ऐसा लगेगा कि मेरे पास ना सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक असली दोस्त के. सो शी डिडंट हैव अ रियल फ्रेंड इन हर लाइफ, शी डिडंट हैव अ क्लोज फ्रेंड इन हर लाइफ. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स, कह रही है कि मैं जो मुझे बस मतलब सोच में आता है या मैं सोचती हूँ जब मैं उन फ्रेंड्स के साथ होती हूँ, इज हैविंग अ गुड टाइम, कि एक अच्छा टाइम हम लोग साथ बिताएं. आई कैन ब्रिंग माई सेल्फ, she says, I can't bring myself. This is one of the very important points about her character. What does she say? That I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday thing. We don't seem to be able to get any closer, and that's the problem. So that is what she is here talking about. All right, she says, क्या बोलती है वो यहाँ पे ये mention करती है, I can't bring myself to talk about anything. वो कह रही है कि मैं ना खुद से ना कुछ किसी चीज के बारे में बात नहीं कर पाती हूँ, सिवाय जो नॉर्मल चीजें होती हैं, जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मतलब हम लोग इससे ज्यादा क्लोज नहीं आ पाते हैं, और यही प्रॉब्लम है. All right. Then she says maybe. So she's not sure. Okay, maybe it's my fault that we don't confide in each other. That means that we don't believe in each other. ऑल राइट, वो कह रही शायद ये मेरा ही फॉल्ट है कि मैं बिलीव नहीं कर पाती हूँ. ठीक है, इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ द थिंग्स आर. वो कह रही है किसी भी केस में इसी तरीके से चीजें हैं. एंड अनफॉर्चुनेटली, और वो कहती है और अनलकीली और बैडली, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज. लाइबल मतलब कि वो बिल्कुल भी लायक नहीं है चेंज होने के. दिस इज वाई आई स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया है. तो यहाँ पे क्या रीजन आ रहा है, हमें क्या रीजन पता चलता है, दैट शी इज अनेबल टू हैव अ रियल एंड अ क्लोज फ्रेंड बिकॉज शी इज अनेबल टू टॉक टू देम ऑल राइट अबाउट एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डिनरी थिंग्स. Okay, there is nothing extraordinary that she is they are dealing with, so they don't seem to be able to get any closer, and that is the problem. और यही दिक्कत है, that is what she says. ओके, वो यही बोलती है और यही दिक्कत है. ओके, दैट इज व्हाट शी मेंशंस. इज दैट क्लियर? चलें नाउ, टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, कह रही है कि बढ़ाने के लिए क्या कहते हैं इसकी इमेज, ये लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है. ओके, सो आपको इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है व्हेन शी सेज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इससे ये पता चलता है दैट शी वाज मिसिंग हैविंग अ फ्रेंड इन हर लाइफ whom she can say everything that was there in her heart. ठीक है? Is that clear? So to enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty. कह रहे हैं कि इसकी इमेज और बढ़ाने के लिए मैं ये नहीं चाहती कि मैं जॉट डाउन मतलब टू नोट डाउन, कि मैं लिखूं फैक्ट्स को इस डायरी में जैसे बहुत लोग लिखते हैं, बल्कि मैं ये चाहती हूँ, बट आई वॉन्ट द डायरी, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि डायरी ना मेरी फ्रेंड बने. एंड आई एम, और मैं इस डायरी को क्या नाम दूंगी, मैं अपनी इस फ्रेंड को नाम दूंगी किटी. Okay, you need to remember this. What is the name that she had chosen for her diary? It was Kitty. Kitty. All right, Margaret Frank was the right answer. Yeah. Alrighty. And house. Beta, ex gamers, no, because I want to make this understandable to everybody. You can join later on if you're in a hurry. And then house is basically made up of bricks and cement. Home is made up of the emotions, the feelings, because of the people who are living inside that place. Okay. Next. Since no one would understand a word of my stories to Kitty, क्योंकि कोई भी ये समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ स्टोरीज, मैं क्या किटी को स्टोरीज बता रही हूँ. इफ आई वर टू प्लंज राइट इन का क्या मतलब हुआ, अगर मैं सीधा इसके अंदर घुसने वाली हूँ तो कोई भी मुझे ये बात नहीं बता पाएगा
All right. Like nobody would be able to tell me, sorry, nobody would be able to understand anything. Okay, that is what she is here talking about. So that is why she gives a reason, like what a sorry, that is why she gives a reason कि वो क्या करने वाली है अब. So अब now she says I would better provide a brief sketch of my life. ऑल राइट. सो इसका क्या मतलब होता है, वो कह रही है कि मैं एक प्रॉपर स्केच दूंगी, यानी कि एक प्रॉपर कैरेक्टर दूंगी मेरी जिंदगी का, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो. कह रही क्यों, लेकिन मुझे ये करना बिल्कुल पसंद नहीं है. दैट इज व्हाट शी सेड. माई फादर, अब उसने क्या अपने पापा के लिए एडजेक्टिव यूज किया, क्या फ्रेज यूज किया, विच इज रियली गुड एंड वी ऑल नीड टू रिमेंबर इट. शी सेड my father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother. तो वो अपने पापा के लिए क्या वर्ड यूज करती है, शी सेज मोस्ट अडोरेबल फादर, ओके, आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माय मदर. शी इज इन्फॉर्मिंग कि उन्होंने मेरे मम्मी से ऑलरेडी लॉन्ग अवेटेड, मतलब वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. Okay, that is what it means. When I said no long awaited, it means that she was waiting, all right, for a long time for a friend like this whom she can share everything that was going on in her heart. Adorable means very loving. Okay. Most adorable means very loving. Okay. सो मोस्ट अडोरेबल फादर जो मैंने कभी आज तक देखे हैं, उन्होंने शादी नहीं की थी जब तक वो 36 के हुए थे, एंड शी वॉज 25. ऑल राइट. उसकी सिस्टर मार्गेट कहाँ पे जन्मी थी, शी वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, ओके, इन जर्मनी. और कौन से ईयर में, 1926. सो यहाँ पे आपके फैक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं जो आपको लर्न होने चाहिए. You should remember these facts. All right, plunging is diving, adorable is lovable, loving. Okay. Now we see that I was born on, अब वो यहाँ पे बताती है मैं 12 जून को पैदा हुई थी 1929 में. मैं फ्रैंकफर्ट में रही. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वाज 4, जब तक मैं 4 साल की थी. माई फादर एमिग्रेटेड, तो मेरे पापा जो है वो एमिग्रेट हुए थे, कहाँ, हॉलैंड गए थे वो 1933 में. माई मदर, यहाँ पे मदर का नाम पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है, विच इज एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, रिमेंबर इट. ठीक है, वो भी उनके साथ गई थी हॉलैंड सितंबर में. लेकिन मार्गेट एंड आई वर सेंट टू आर्चन टू स्टे विद आवर ग्रैंडमदर. सो प्लीज रिमेंबर दिस. मार्गेट वेंट टू हॉलैंड. मार्गेट कब हॉलैंड गई, वो दिसंबर में गई थी. एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी. तो वो कह रही है मैं हॉलैंड फिर फेब्रवरी में गई थी. When I was plunked down on the table as a birthday present for market. जब मेरे को as a birthday present, मतलब टेबल पे रखा गया था, that means कि मुझे वहां पे present किया था as a birthday present to market. That's it. All right, clear everybody. ठीक है. Next, I started right away at the Montessori nursery school. कह रहे हैं तब मुझे कहाँ पे डाला था, I started मतलब मेरा एडमिशन करवा दिया था कहाँ पे, Montessori nursery school में. I stayed there until I was 6. तो मैं वहाँ पे रुकी थी जब तक मैं 6 साल की थी. At which time I started in the first form. तो तब वहाँ पे मतलब जब मैं 6 साल की हुई थी, मैं फर्स्ट क्लास में आ गई थी. इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज, मतलब जब मेरी सिक्स्थ क्लास थी, मेरी टीचर कौन थी, मिसेस क्यूपिरस. रिमेंबर द स्पेलिंग इज KUPERUS. ठीक है. शी वॉज द हेड मिस्ट्रेस. ठीक है. नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड में वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों रो रहे थे, एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल. क्यों, क्योंकि हम लोग फेयरवेल मतलब व्हेन यू आर बिडिंग योर गुड बाय. ठीक है. तो क्यों, क्योंकि एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मतलब दिल को दर्द देने वाला फेयरवेल हुआ था. इन द समर, मतलब अब गर्मियों में 1941 में, ग्रैंड मा फेल इल. सो मेरी जो ग्रैंड मॉम थी वो बीमार पड़ गई थी एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन हुआ था. सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन. तो जो मेरा बर्थडे था ना, वो बहुत ही लिटिल सेलिब्रेशन, यानी कि बहुत कम सेलिब्रेट किया था. Grandma died in January 1942. Please remember. Alright, this is very important, everybody. Guys, my voice is absolutely correct at my end. I really don't know where is this problem coming from. Is the voice clear now? Is the voice clear now, everybody? Yes or no in the comment section, please.
ओके ऑल राइट बेटा, प्रियांशु बाद में होगी, मेंटी अभी नहीं हो रही है। ओके सो यहाँ पे ग्रैंडमा की जो डेथ हुई थी 1942, बेटा ये वाला जो चैप्टर है ना फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इट हैज गॉट अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, ओके एंड आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग दैट whenever we are dealing with a factual chapter, you always need to give it a read, like you're supposed to read it. Okay, please make sure once you read it, you are marking every important point in your book and you are reading it, all right, and you are learning it along, because you cannot distort the facts ever. That's not welcoming. Okay, we cannot do that. Am I making sense? Okay. Now, next, everybody. So, grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. So, what does she say? She's saying कि मतलब किसी को ये नहीं पता कि कितनी बार मैं उनको याद करती हूँ और मैं अभी तक उनसे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन, इस बार का जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 में, वॉज इंटेंडेड टू मेकअप फॉर दी अदर। तो मतलब जो हमने 1942 में बर्थडे बनाया था ना, वो बेसिकली एक तरीके का मेकअप था, क्योंकि पिछली बार हमारी अच्छे से सेलिब्रेशंस नहीं हुई थी। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट, कह रहे हैं जो मेरे अलोंग विद द रेस्ट मतलब जो उसकी बर्थडे कैंडल्स थी, उनके साथ साथ ग्रैंड माँ के लिए भी कैंडल जलाई गई थी। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। अब वो वापस से हमारे डायरी लिखते लिखते प्रेजेंट में आती है। ओके उसने एक ब्रीफ इंट्रो तो दे दिया, ऑलराइट, दैट इज व्हाट शी सेड, नो, उसने एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया। नाउ हियर हर्षित, उसने बोला जो हम चाह रहे हैं, वी आर स्टिल डूइंग वेल, मतलब हम लोग अभी तक अच्छे से सब कुछ सही कर रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट, और वो मुझे मेरी प्रेजेंट डेट पर लाती है। तो जब वो डायरी लिख रही है, वो कौन सी डेट है? वो है 20 जून 1942, रिमेंबर इट। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, कह रहे और मैं ये डेडिकेशन दे रही हूँ मेरी डायरी को, ठीक है। डियरेस्ट किटी, इस तरीके से वो लिखना स्टार्ट करती है, वो बहुत प्यार से अपनी किटी को एड्रेस करती है। दैट वाज अ क्लोज एंड अ रियल फ्रेंड फॉर हर। ओके वो क्या कहती है? डियरेस्ट किटी, all right, our entire class is quaking in its boots, all right, quaking in its boots means that they are nervous, all right, they are worried about. Quaking in its boots is basically a phrase which means like you're being nervous because something is being awaited, ठीक है। सो अब वो लिखती है डियरेस्ट की टीम, हमारी पूरी क्लास जो है वो नर्वस है। रीजन ऑफ कोर्स, रीजन क्या है? इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। सो कह रहे रीजन क्या है? जो फोर्थ कमिंग मतलब आने वाली, ऑलराइट, अबाउट टू कम, ठीक है, क्योंकि जो आने वाली मीटिंग है जिसमें हमारी टीचर्स ये डिसाइड करेंगी कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन इसी क्लास में रहेगा। ओके, हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, यानी आधी से ज्यादा क्लास शर्त लगा रही है। नाउ GN रेफर्स टू द नेम ऑफ अ स्टूडेंट, GN एंड आई, मतलब GN और मैं, लाफ अवरसेल्फ सिली, हम बहुत तेज तेज मतलब पागलों की तरह हंस रहे हैं, एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, दो लड़कों पे जो हमारे पीछे बैठे हैं, और उन दो लड़कों का क्या नाम है? CN and Jax. Please remember the names. Okay, very important. Alrighty, that is Jax is the name of the student that she is talking about. ठीक है, CN भी वही नाम है, all right. Then Jax भी वही है. Who have staked their entire holiday savings on their bet, मतलब कि उन्होंने दाव पे, staking is like दाव पे लगाना, ठीक है, उन्होंने दाव पे लगा दी अपनी सारी छुट्टियों की सेविंग्स उनकी शर्त पर, ठीक है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से शाम तक, इट इज मतलब वो लोग क्या सुनते हैं? यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट, मतलब सबके यहाँ पे यही चल रहा है कि तू तो पास हो जाएगा, वो कहता है मैं नहीं हूँ, फिर तू पास हो जाएगा, मैं नहीं हूँ, तो उनको यही चीजें सुनाई देती है। फिर इवन जी, ठीक है, तो कितने स्टूडेंट्स हमें पता चले? जी, CN, जैक्स एंड GN, ठीक है, प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। All right, is that clear to everybody? I can very well hear the sound, Priyanshu. If you are not here to study, my dear, you can leave. No problem. All right, the world is not going to stop. Can't you guys hear me, everybody? Please tell me, am I audible? Am I audible? Yes or no?
ओके कूल, ठीक है। नेक्स्ट इज हु हैव स्टेक्ड मतलब दाव पे लगाना, ऑल राइट, लाइक दे आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग देयर एंटायर अमाउंट। नाउ इवन जी इज प्लीडिंग ग्लांसेस, प्लीडिंग मतलब कि वो क्या कर रहा है, जी क्या कर रहा है कि मतलब ये कोशिश कर रहा है कि जी इज बेसिकली रेफरिंग टू जी एन ओनली, ऑल राइट, ही इज नॉट द अदर स्टूडेंट, आई एम सॉरी। प्लीडिंग मतलब कि वो कह रहा है, प्लीडिंग ग्लांसेस मतलब इधर उधर देख रहा है कि भाई चुप हो जाओ, लाइक दैट, ग्लांसेस लुक, ओके, प्लीडिंग इज रिक्वेस्टिंग। Alrighty, is that clear everyone? तो now वो कहती है और मेरे एंग्री आउटबर्स्ट का क्या मतलब होता है, और जो मेरा गुस्सा होना, कैन काम देम डाउन मतलब वो उनको ना काम डाउन नहीं कर रहे थे। इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर तुम मुझसे पूछोगे ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डमीज मीन्स द स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब तुम लगा लो अबाउट आधी से ज्यादा क्लास, क्वार्टर ऑफ द क्लास मीन्स मोर देन हाफ, राइट, शुड बी कैप्ट बैक। वो कह रही है कि मेरे हिसाब से तो ना आधी से ज्यादा क्लास को ना वापस से इसी क्लास में रखना चाहिए, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फ्रॉम दिस चैप्टर वेयर शी सेज व्हाट, कि जो टीचर्स है ना वो सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है क्रीचर्स ऑन अर्थ। तो वो ऐसा क्यों कहती है, वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि एक इंसिडेंट होता है। नाउ लेट्स सी क्या होगा। सो वो कह रही है आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वो कह रही है कि जो मेरी जो दोस्त हैं मैं उनके लिए इतना चिंतित नहीं हूँ, ना ही मेरे लिए। विल मेक इट मतलब कि वी विल पास, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, वो कह रही है जो सिर्फ सब्जेक्ट जिसके लिए मैं गारंटी नहीं ले सकती हूँ वो है मैथ्स। एनी वे ऑल वी कैन डू इज वेट, कह रही है लेकिन छोड़ो हम क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। Until then, तब तक we keep telling each other not to lose heart, लेकिन तब तक हम एक दूसरे को बोलते हैं not to lose heart basically means not to lose hope. All right, that is what we are telling each other. I get along pretty well with all my teachers. वो कह रही है I get along pretty well means I have a good reputation and I have a good bond with all my other teachers. There are 9 of them. ठीक है, तो वो क्या बता रही है टोटल कितने टीचर्स हैं उसके, 9 टीचर्स हैं, जिसमें से 7 जो हैं वो मेन हैं, ऑल राइट, और जो 2 हैं वो है विमेन, ठीक है। नाउ शी सेज मिस्टर कीजिंग, एक मिस्टर कीजिंग टीचर है। द ओल्ड फौजी दैट मीन्स ओल्ड फैशन्ड मैन, ऑल राइट, ओल्ड फौजी मीन्स ओल्ड फैशन्ड मैन who teaches maths, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, was annoyed with me for ages because I talked so much, वो मेरे से ना बहुत ही ज्यादा annoyed थे, I mean वो मेरे से बहुत ही ज्यादा दुखी थे क्योंकि मैं बहुत बात करती थी। After several warnings, he assigned me extra homework. काफी सारी warnings के बाद उन्होंने मुझे एक extra homework दिया। Alright, an essay on the subject. उन्होंने मुझे क्या homework दिया, एक essay लिखना था। किस पे essay लिखना था? A chatter box. आप जब answers लिखोगे अपने notebook में examination में, आप इसको single inverted comma में ही लिखोगे because this is the title that was being given. Okay, hey Aman, hi Mamta. Yeah. Alright, a chatterbox. X gamers, it's not chatterbox, it's a chatterbox. Okay, is that clear? Now, a chatterbox, now dash is given. What can you write about that? इसके बारे में क्या लिख सकते हो? I would worry about that later. वो कह रही चलो इसके बारे में ना मैं बाद में चिंता करूंगी, मैंने ऐसा डिसाइड किया। I jotted down the title in my notebook. Jotted down means to note down. ठीक है, कि मैंने जो टाइटल है ना अपनी नोटबुक में नोट डाउन किया, टक्ड इट इन माय बैग मतलब अपने बैग में रख लिया, एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और मैंने कोशिश की कि मैं चुप रहूं। दैट इवनिंग, उस शाम को, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस इवनिंग जब मैंने अपना बाकी का जितना भी होमवर्क था कंप्लीट कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, मतलब जो मैंने नोट बनाया था ना कि मुझे ये ऐसे लिखना है, तो मेरा ध्यान उस पे गया। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो मैंने ना सोचने लगी मैं उस सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। सब्जेक्ट बेसिकली रेफर्स टू द टॉपिक, ठीक है, कि क्या लिखूं। वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, सो वो कौन सा पेन यूज कर रही थी, फाउंटेन पेन, तो वो च्यू कर रही थी टिप फाउंटेन पेन का और सोच रही थी क्या लिखूं। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words. Ramble on means that anybody can write anything coming in his or her mind, and they can leave the big spaces, okay, between the words. But the trick was to come up with the convincing arguments to prove the necessity of talking. ठीक है, ये है
वो कह रही है लेकिन ट्रिक क्या आती है कि मुझे ऐसे कन्विंसिंग मतलब ऐसे आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं, ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने हैं कि वो कन्विंस हो जाएं कि जरूरत है बात करने की। ओके, आई थॉट एंड थॉट, ओके, थॉट एंड थॉट, थॉट 2 बार रिपीट किया गया, क्या बताने के लिए कि वो बहुत दिमाग लगा के सोच रही थी। वो कह रही है मैंने सोचा और सोचा एंड सडनली, और अचानक से आई हैड एन आइडिया, और मुझे अचानक से एक आइडिया आया था। आई रोट द 3 पेजेस, कितने पेजेस लिखे? 3 पेजेस लिखे उसने टॉपिक अ चार्टर बॉक्स पे। मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी एंड वाज सैटिस्फाइड, और मैं लिख के ना बड़ी खुश हुई। आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज, और मैंने ना आर्ग्यू भी किया, मैंने क्या लिखा कि टॉकिंग बात करना एक स्टूडेंट की ट्रेट है, ट्रेट मतलब क्वालिटी है, ठीक है, कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपना बेस्ट करूंगी कि मैं उसे कंट्रोल में रखूं, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं कभी भी क्योर मतलब ठीक करना, ओके, मैं उसे कभी भी क्योर नहीं कर पाऊंगी इस हैबिट को, सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। ओके, तो उसने क्या बोला कि मेरी मम्मा भी इतना बात करती हैं जितना मैं करती हूँ, इफ नॉट मोर, मतलब अगर ज्यादा नहीं तो मेरे जितना तो करती हैं, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, इनहेरिटेड रेफर्स टू द like the genes or the qualities that you have gained from your parents, ठीक है। सो नाउ शी इज सेइंग कि जो क्वालिटीज, जो मैंने चीजें अपने माँ बाप से पाई हैं, ठीक है, और वो मेरा कैरेक्टर है क्योंकि मेरे माँ बाप भी ऐसे ही बोलते हैं, तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। तो शी वॉज बींग वेरी स्मार्ट एंड गिविंग अ रीजन फॉर दिस। ऑल राइट, इज दैट क्लियर एवरीबडी? Okay, Shant. Okay, ex-gamers, thank you so much. Anyway, Priyanshu is kicked out of the class. Okay, moving ahead. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments. So Mr. Keesing ने अच्छे से, एक बहुत अच्छे से ना उनको हंसी आई जो भी उन्होंने बोला. But when I proceeded to talk my way through the next lesson, लेकिन जब मैं आगे अपना बढ़ने लगी दूसरे लेसन की ओर, he assigned me a second essay. उन्होंने मुझे एक दूसरा essay दे दिया. This time it was supposed to be an incorrigible chatterbox. Incorrigible chatterbox. Please remember. सेकेंड एस्से का नाम क्या था? एन इनकॉरिगेबल चैटरबॉक्स। इसका क्या मतलब होता है? इनकॉरिगेबल रेफर्स टू समथिंग दैट जस्ट कैन नॉट बी करेक्टेड। जो चीज सही नहीं की जा सकती है उसके लिए आप ये वर्ड इनकॉरिगेबल यूज करते हो। ओके, so now, an incorrigible chatterbox. I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain. कह रहे हैं ठीक है मैंने वो भी लिख दिया. I handed it in means I had returned that too. And Mr. Keesing had nothing to complain. और Mr. Keesing के पास कुछ भी नहीं था complain करने के लिए. About for 2 whole lessons. यानी कि जो अगली 2 classes थी तब तक उनके पास कुछ भी मुझे complain करने के लिए नहीं था. However, लेकिन during the third lesson यानी कि जब तीसरा क्लास वापस हुई उसके बाद ही हैड फाइनली हैड इनफ, मतलब उन्होंने ना, मतलब उनके लिए तो बहुत ज्यादा हो गया था क्योंकि मैं बात इतनी करती थी. एंड फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. तो ये जो वर्ड्स है ना लास्ट के जो 3 लाइन्स है, दीज आर द डायरेक्ट वर्ड्स ऑफ द टीचर. And Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. So entitled basically refers to the title, जिसका टाइटल क्या है? Quack 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 said Mistress Chatterbox. ये टाइटल है. All right, clear? ठीक है. नाउ द क्लास रोड, अब क्लास फिर से हंसने लग गई. रोरिंग हेयर मीन्स लाफिंग. द क्लास लाफ्ड. ओके, आई हैड टू लाफ टू, कह रही मुझे भी हंसना ही पड़ा. दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस. कह रही है लेकिन ना मैंने नियरली, नियरली मीन्स ऑलमोस्ट, मैंने ऑलमोस्ट ना बिल्कुल अपना जो एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट मतलब बिल्कुल खत्म, माई इंजेन्युइटी मतलब मेरी खुद की एक्चुअल जेन्युइन सोच इस टॉपिक पे खत्म हो चुकी थी. ठीक है, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स. अब टाइम क्या था कि मैं कुछ और सोचूं, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ऐसा जो बिल्कुल ओरिजिनल हो. माई फ्रेंड सैन, प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द फ्रेंड, इट वॉज जैन. ओके, SANNE. ठीक है, सो माई फ्रेंड जैन हु वॉज गुड एट पोइट्री, जो बहुत अच्छी पोएम लिखती थी, ऑफर टू हेल्प मी, उसने हेल्प किया मेरे को क्या लिखने के लिए? ऐसे बिगिनिंग से लेके एंड तक इन वर्स.
इन वर्स, वर्स का क्या मतलब होता है, वर्स मीन्स पोम, ठीक है। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, कह रही है और मैं खुशी से पागल हो गई। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीजिंग मेरा मजाक उड़ाना चाहते थे अपने रिडिक्यूलस सब्जेक्ट के साथ, यानी कि इस रिडिक्यूलस, इस स्टूपिड टॉपिक के साथ, इस स्टूपिड टाइटल के साथ। बट आई हैड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, लेकिन मैंने पक्का से श्योर किया कि जोक उन पर ही पड़ जाए उल्टा। ओके, I finished my poem and it was beautiful. यहाँ पे exclamation क्यों दिया गया है? When we talk about the beautiful things, like the amazing things, no, तो that comes under the exclamatory thing. तो उसने बोला कि मैंने ना अपनी poem खत्म कर ली, all right, और वो बहुत अच्छी थी। वो किसके बारे में थी? वो एक मदर डक के बारे में थी, ऑल राइट, और एक फादर स्वैन के बारे में थी, विथ 3 बेबी डकलिंग्स। उनके 3 छोटे-छोटे बच्चे थे जो हम डकलिंग्स बोलते हैं, डक के बेबी को आप डकलिंग बोलते हो। हु वर बिटर्न टू डेथ, मतलब कि उनको ना, मतलब क्या किया, उनको मतलब काट काट के मार दिया था। किसने? पापा ने उनके, बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करते थे, ठीक है। सो दिस इज एब्सोल्युटली फनी, ऑलराइट। लकीली, लेकिन लकीली मतलब अच्छी तरीके से, यानी हैप्पीली, मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर कीजिंग ने जोक को सही तरीके से लिया। ही रेड द पोम टू द क्लास, उन्होंने पूरी पोम क्लास को पढ़ी, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उन्होंने अपने कमेंट्स ऐड किए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, मतलब कि उन्होंने हमारी क्लास में तो पढ़ा, बाकी जो और क्लासेस थी उसमें भी उन्होंने पढ़ा। ओके, Since then, मतलब तब से I have been allowed to talk, तब से मेरे को परमिशन है मैं बात करूं, and haven't been assigned any extra homework, और तब से मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता। Okay, now Mr. Keesing always makes sorry, on the contrary मतलब opposite to what happened, Mr. Keesing always makes jokes these days, Mr. Keesing हमेशा joke करते हैं इन दिनों, all right, तो ये change आया। तो अब ये चैप्टर खत्म होता है जहां पे लिखा जाता है नीचे yours and extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. Okay, that's it. Okay, so the chapter seems to be clear to everybody. I hope that now let's get going towards our Menti quiz, wherein I have made 18 questions for everyone. So quickly join in. Okay, X Gamers, ma'am, can we still buy an account because of, yeah, X Gamers, because now the batches that are going to come, they are going to be just highlight, both specific. Okay, the entire syllabus is going to be done, the entire thing, because we have time, like 5 months are there. Okay, so we are now coming up with the batches that will be very helpful in the plus batches. Even I am also going to come up with that, all right, so you guys would be getting the information and the understanding right from the very scratch, okay, of your syllabus. So you better take a good decision. Okay, please tell some 6 marker questions from there. I'm having my exam tomorrow. ईशान बेटा, इस चैप्टर से ना आपका ये आ जाता है 6 marker, तो ये आ सकता है that describe the life of Anne Frank. Okay, why did she feel alone, ये एक combined question आ सकता है, और you can simply be asked about the character sketch of Anne Frank, इससे ऊपर नहीं आएगा बिल्कुल भी. Also you can talk about like she just a minute. Yeah, so the next question could be like how was she able to deal with Mr. Keesing, okay, or what were the different essays that were being given by Mr. Keesing, what does this show about Mr. Keesing, ये question आ सकता है. Nothing more than that is going to come, Ishant. ठीक है, कैरेक्टर स्केच आ सकता है जो सब कुछ कवर करेगा. आपने एक बार कैरेक्टर स्केच कवर कर लिया ना, उसमें एनालिसिस हो गया है आपका कवर, तो आपका सारा चैप्टर कवर्ड है. ओके, बिकॉज मोर और लेस आपने उसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए होंगे. ऑल राइट, जल्दी से ज्वाइन करो बेटा. आई एम गोना स्टार्ट इन अ मिनट, एवरीबडी क्विकली. Quickly everybody. Okay, let's get going everyone. The very first question on your screen, and let's see who all are going to give me the right answer. What was the subject on which she had to write? Priya, the next session is going to be tomorrow at 2 p.m. wherein we are doing what? We are, I think, doing, now yeah, we are going to do top 40 questions. Okay, top 40 subjective questions of Anne Frank and Nelson Mandela. So be right there.
Necessity of talking, absolutely correct. Let's get going, everybody. Here we go. So we have RA, Priyanshu, Physics, and we have SVN, Bill, and Ashant. Okay, next question. Question number 2 on your screen. What was the topic of the essay written by Anne? My diary, a chatterbox, a letterbox, none of the above. Okay, 9 students, absolutely correct. Let's have a look at the RA, Priyanshu, Physics, SVN, Bell, Magical, Prakha, Sujata, Ishant. Great, guys. Next question. Question number 3 on your screen. How does how does Anne explain his father? Most adorable father, most angry father, most delicate father, none of the above. Surabhi, great, very nice. A very many congratulations, sweetie. अब now guys, once you'll be done with your half yearly ना, कुछ दिन का break लेके like 2 to 3 days का break लेना, उसके बाद start preparing for the boards. It's important. 9 students, absolutely correct. Let's have a look at the leaderboard. RA at the first position, then we have Physics, then Priyanshu, Bill, Magical, the fastest one, Sujata, Prakhar, Ishant, SVN, and Maverick. Alright, question number 4 on your screen. Who is Anne's long-awaited friend? Her pen, her cat, her diary, her dog. Very good, her diary. Let's have a look at the leaderboard. RA, Physics, Priyanshu, Bell, Anjali, Sujata, Prakhar, Ishant, SVN, and Harish. Let's see that who is actually at the first place. So it's RA and Physics. You are the fastest one. That's lovely. Now question number 5 on your screen. How does she want to begin her diary? उसको कैसे अपनी डायरी स्टार्ट करनी है? By writing her name, by giving an introduction, by writing about her hobby, none of the above. Okay, 9 students, absolutely correct. Let's have a look at the leaderboard, everybody. RA, Physics, Prakhar, Ishant, Priyanshu, Sujata, SVN, Bill, Anjali, and Harsh. Chaliye, next question. Hi, Sandeep, you're too late to say hi to me. On which day did Anne record the incident in Mr. Keesing's class in her diary? 12 June 1942, 21 June 1942, 20 June 1942, 22nd June 1942. Yes, everyone, quickly please. Okay, I told you all it's 20th June 1942. I made it so clear if you had heard me clearly or not. I have told you there are a lot of facts in the given chapter. It's better for all of you to remember all those facts and kindly do it, okay? Any kind of question can be there. R.A. Ishant, Sujata, the fastest one, Physics, Priyanshu, SVN, Prakhar, Bill, Anjali, and Harsh. Next, everybody, question number 7 on your screen. Let's get going, everyone. In which city were Anne and Margaret sent to live with their grandmother? कौन सी city में भेजा गया था? Berlin, Aachen, Munich, or Bonn? You have 20 more seconds, everyone. 13, 12, 11, 10 more seconds to go. 2, 1, and the time is up. It's Aachen, guys. Come on, I had made this so clear. Alright, that is what I had given. No? Yeah. Okay, let's have a look at it, everyone. R.A. Ishant, Sujata, Physics, Priyanshu, SVM, Prakhar, Bell, Anjali, and Harsh. Okay, Ishant is actually at the first position. I'm glad. And Priyanshu, you are the fastest one. Great. Let's get going towards the next question. Question number 8 on your screen. Who was the only survivor from Anne's family? Nope. No, Sandeep.
Anne's father, Anne's mother, Anne's sister. Anne's father. Absolutely correct. Let's have a look at the leaderboard. And what was the name of the father? Can you tell me in the comment section? The name of the father, please. Ishan, the fastest one. R.A. Prakha, Sujata, Priyanshu, Physics, SVN, Bill, Harsh, and Anjali. Great. Question number 9 on everybody's screen. How many siblings did Anne have? कितने siblings थे Anne के? 1, 2, 3, 4. Quickly, people, quickly. Very good. 1. Let's have a look at the leaderboard, everybody. Ishan, the fastest one. R.A. Prakha, Sujata, SVN, Priyanshu, Physics, Harsh, Bill, and Anjali. Great. Question number 10. Here we go. What name was her book published with? What name her book published with? Hey Swati. What was the name of the book? The Diary of a Young Girl. बेटा मैंने बहुत क्लियरली आपको ये स्टार्टिंग में बताया है. फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इज द नेम ऑफ द चैप्टर जो आपके सिलेबस में है. लेकिन ये चैप्टर कहाँ से उठाया गया है? उसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. रिमेंबर इट. ओके. Leaderboard, here we go. Ishan at the first position. Okay, R.A. Prakhar, Ishan, Sujata, Physics, SVN, Priyanshu, Harsh, Bill, and Anjali. Great. Question number 11. We are done with 10 questions. Congratulations if all your answers were right. What did she write in her last essay? उसने अपने आखिरी essay में क्या लिखा था? A poem, a joke, a paragraph, a funny poem. ओके बेटा अ फनी पोम नो. बी स्पेसिफिक. हंसने वाली पोम थी. ठीक है. लेट्स हैव अ लुक एट द लीडर बोर्ड. R.A. Sujata, the fastest one. Prakhar, Ishan, Physics, SVN, Harsh, Bill, Priyanshu, and Anjali. Great. Question number 12 on everybody's screen. Why was she unable to get closer to her already existing friends? क्यों वो पास में नहीं जा पा रही थी उनके? She didn't like her friends. उसको अपने friends नहीं पसंद थे. Her friends are not understanding क्योंकि understanding nature नहीं था. She can't bring herself to talk about personal stuff, or you'll say all of the above. Yeah, she can bring herself to talk about personal stuff. Absolutely correct. Leaderboard, here it is. R.A. Sujata, fastest one. Karishan, Physics wala, we have SVN, Harsh, Bill, Priyanshu, and Saloni. Next question, question number 13 on your screen. Yes, 18 more seconds, be quick. Very good. It's both 1 and 2 because she still thinks about her and she misses her. Okay. Let's get going. Let's have a look at the leaderboard, everyone. R.A. Sujata, Ishan, the fastest one. Prakhar, Physics, SVN, Harsh, Bell, Priyanshu, and Saloni. Question number 14 on your screen. What language was the diary originally written in? मैंने आपको इसका आंसर बताया था. If you had listened to me carefully.
What language was the diary originally written in? Spanish, English, Dutch, or French? Iconic Strange Gaming, Dutch. Very good, very good. I like that. All right. So कौन-कौन है leaderboard पे? Arya, Sujata, Fastest One, Nishant, Prakar, Physics, and then we have Bill, SVN, Harsh, Priyanshu, and Saloni. Next question, question number 15. ये रहा आपकी screen पर. Why was Mr. Keesing annoyed with her? She was not a good student, she was talkative, she was rude, all of the above. She was talkative. ठीक है. Now we have the leaderboard. Arya, Sujata, Ishandi, Fastest One, Prakar, Physics, Bill, Harsh, Saloni, SVN, and Priyanshu. Question number 16 on your screen. Why does she give a brief sketch about her family in the diary? No one would understand if she dove right in. To introduce Kitty to her family, she would forget about facts about her family. She liked talking about her family. Okay, no one would understand if she dove right in. Absolutely correct. Chaliye, leaderboard की ओर. Arya, Sujata, Ishan, very good. Sujata and Ishan, आप दोनों fastest हो. Prakar, Physics, Harsh, Bell, Saloni, SVN, and Priyanshu. Next, question number 17 on your screen. It's Mr. Keesing. That's it. Why does Anne want to keep a diary? She has no close friends, right? Arya, Sujata, Ishan, Prakar, Physics, Harsh, Bell, Saloni, SVN, and Priyanshu. Good. Now the last question on everybody's screen, everybody. Why was writing in a diary a strange experience for Anne? And this is a question that can even come in your 2 and a 3 marker too. She had never written anything before. She didn't know how to write. Neither she nor anyone else would be interested in it later, or you'll say both A and C. Three, two, one, and the time is up. Of course, both A and C. So let's have a final look at the leaderboard with the final winner. Arya, Sujata, Ishan, Prakar, Physics, Harsh, and Bell, Saloni, SVN, and Priyanshu. So I'm glad like most of you gave the right answer. Okay, Arya, you are the winner. A very many congratulations. People, pretty important. Please read the entire chapter on your own as well. If there is any doubt, you can post it in the comment later on once the session is over. Because I want all of you to be very clear about everything that's there. Also, guys, today I'm gonna take up the literature test. Okay, right at 8 p.m. All right, in the special class today. It's gonna be the entire poll session. Please make sure you're gonna be there. जितना भी literature का पाठ है आपका उसका आज मैं test लूंगी. I just want to know how well you all have read the chapter. Alrighty, is that clear to everybody? Yes. Is that clear to everyone? Okay, so CBSE class 10 achievers list everyone. Remarkable performance by Unacademy learners in CBSE class 10 board examination. 99.8% highest scorer rahe hain. 412 plus learners secured 90% or more. 100 plus learners secured 95% or more, and 114 plus learners secured 100 marks in different subjects. So you have the important thing with all of you, okay, that is Iconic and Plus subscription. In Iconic, we are providing you all personal guidance, one-on-one guidance from the top exam experts. Test analysis would be there, one-on-one guidance from the top exam experts. Study planner would be there, customized study plan with bi-weekly reviews.
Study material would be there, specialized notes and practice sets, experts guidelines would be there, study booster workshop by exam experts. In plus, you'll have the live classes, you will have the weekly tests, you'll have the structured courses and unlimited access. All these things can be your if you go ahead with the code PSH10, because today is the date when the offer unlock 20 is getting ended. Okay, it's gonna be end right at 11:59 p.m. So like a few hours they are being left. Ace your preparation with the top educators. Get 20% off on CBSE subscriptions. Get comprehensive syllabus coverage, comprehensive notes and PDFs, PYQs, live tests and quizzes, and in class doubt solving by top educators would be there. So subscribe right away by using the code PSH10. Do not delay it, everybody. Also, you can contact at the number 8585858585 if you want to know more details, and that's gonna be really helpful. So guys, for example, right now in plus, if you want to go for 24 months, no, it'll be costing you 38,000 99 rupees. Okay, like the actual cost right now. But if you're gonna pay no right now, it'll be like 30,479 and you're gonna save a lot. Okay, it's 38,099 rupees what you are going to pay now because of the unlock 20 offer, that is 30,479, and what you're going to save is 7,622, which is 20% saving. Similarly, in Iconic, for example, for 18 months, it's like 46,280 in. Yeah, what you're gonna pay 37,030 rupees, and how much you're gonna save 9,258. You can check out the other durations as well. It's really helpful. Code ko use karo fatafat se. Don't let the date go away. 20% discount is waiting for all my dear and darling students. Okay, go ahead, everyone. And now, UNSAT, like the biggest scholarship test of Unacademy is coming up. You all can crack UNSAT and win up to 100% scholarship. This is for IIT, JEE, NEET, UG, and class 9 to 12 students. Exclusive access to special ranker group. You all can win a trip to the Eurospace Center. Test dates would be October 8 and 15. Register right away using the code PSH10. It's going to be like really good for everybody right in there. You can call at the number 8585858585 for more details. All right. Now coming to the fact, everybody, we started the amazing batches for all of you, and a lot more new amazing batches are coming for everybody right in there. You all can target half yearly for CBSE class 9. All right, we started this on September 1. Mode of delivery is Hindi. Himal sir, Kunal sir, Digras sir, Bhavna ma'am, and Lakhan sir are there teaching you science, math, social science, Hindi, B, and English respectively. So you can be a part of all these like batches by using the code PSH10, because that'll be giving you 20% discount. ऑफर बेटा आज खत्म हो रहा है, यूज कर लो, अपने मम्मी पापा से बात कर लो, जिससे डिस्कस करना है कर लो, एंड बी अ पार्ट ऑफ इट. ओके, इट्स फॉर योर गुड. हे नुमान, हाय डियर, हाय निखिल. एंड रैपिड रिवीजन है हाफ ईयरली की क्लास 10 के लिए. स्टार्ट डेट सितंबर 11 2022. हमने स्टार्ट कर दिया. मोड और डिलीवरी इंग्लिश है यहाँ पे. विनय सर है, भावना मैम है, दिगराज सर है, वंदना मैम एंड आकाश सर हैं, जो आपको मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश और हिंदी भी पढ़ा रहे हैं. So जल्दी से कोड यूज करो PSH10 and make a move, everybody. Make a move for your good. So I hope you all love the session. Thank you, everybody. And if you're watching the session for the first time, or if you have watched the session for the first time, do not forget to subscribe the channel by hitting the bell button, and definitely like the session and share it with all your friends. I'm gonna catch